फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में यह एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। फ्रेंड्स, राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। मैं एक बार फिर इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए, भारत के प्रति आपकी मित्रता के लिए और हमारे साझा भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. Request His Excellency, Mr. Antonio Costa, President of the European Council, to give his remarks to the media. Prime Minister Narendra Modi, my dear friends, dear Ursula, Ministers, dear Skaya and Maros, good afternoon. Thank you, dear Prime Minister Modi, for welcoming us on this special occasion. We were privileged yesterday to be your chief guests for the Republic Day celebrations.
such an impressive display of India's capabilities and diversity. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share three messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. That's why today's free trade agreement is of historic importance. One of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe, and around the world, reaching a new level of strategic trust between us. That is the significance of our agreement on a security and defense partnership. The first such overarching defense and security framework between India and the European Union, and the first step towards even more ambitious cooperation in the future. This brings me to my second message. As the world's largest democracies and champions of multilateralism, the European Union and India share the responsibility to upholding the international law with the United Nations Charter at its core. Earlier this morning, we and President Ursula had the opportunity to pay tribute to Mahatma Gandhi. And I reflected upon his words, which still holds true today, and I quoted, "Peace will not come out of a clash of arms, but out of justice lived and done by unarmed nations in the face of odds." Our summit reaffirmed our commitment to supporting efforts towards a comprehensive, just and lasting peace
in Ukraine, one that fully respects Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. This is a key moment. We are supporting all efforts to reach a just and sustainable peace. Ukraine has shown its readiness, including at the cost of difficult compromise. I know, dear Prime Minister, that we can count on you to help creating conditions for peace through dialogue and diplomacy. And this is my final message. Together, we must show leadership on global issues. Cooperation between the European Union and India will help shape a more balanced, resilient, and inclusive global order. Just two examples. I'm proud of the commitments we are making for greater cooperation on clean energy, green transition, and climate resilience. And our collaboration through the Global Gateway and on the India-Middle East-Europe Economic Corridor is decisive for global connectivity. By implementing the ambitious Joint Comprehensive Strategic Agenda towards 2030, we will align our priorities with concrete actions for the next 5 years, delivering real benefits to our citizens. Today, we have tangible progress and set an example of cooperative leadership on global issues with our free trade agreement, our security and defense partnership, and our joint strategic agenda. These outcomes are crucial milestones on the longer path. We look forward to continuing the journey together, as always. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to give her remarks to the media. Dear Prime Minister Modi, distinguished friend, Antonio, my friend, ministers, especially Shankar and Guyal, Vice President Kallas, Commissioner Šefčovič, Excellencies, friends, thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests at the Republic Day yesterday. This is a memory I will carry for a lifetime, because the sense of communion was so powerful. People filled the streets united in pride and joy of belonging to the Indian nation, and rightfully so. India has risen, and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago, the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today, we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes.
And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. At the same time, this agreement will build on the natural complementarity of our economies. It brings together Indian skills, services, and scale with Europe's technology, capital, and innovation. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We will discuss this and more at our first EU-India Business Forum later today. I want to offer a special word of thanks to the people who worked so hard to make this day a reality. Starting with the European Union's Trade Commissioner Maroš Šefčovič and his counterpart, India's Commerce Minister Piyush Goyal. You have done an outstanding work. This is historic, and it would not have been possible without you. I also want to pay tribute to their colleagues, Sabine Weyand and Secretary Rajesh Agrawal. Many others made vital contributions. I congratulate you all. The hard work was worth it. Prime Minister, distinguished friend, we're not only making our economy stronger, we're also delivering security for our people in an increasingly insecure world. And today, the world's two largest economies and democracies launch their first ever security and defense partnership. This is a landmark departure and a trust-based platform for cooperation on the strategic issues that matter most. In doing so, we will help to build each other's resilience. Europe and India have a long history of cooperation in the defense industry. Now we will enhance this teamwork even further. We will deepen our cooperation on maritime security, for example, joint naval exercises to tackle piracy. And we will step up our work on countering cyber and hybrid threats, which are getting more sophisticated by the day. And our partnership includes a dedicated dialogue on space security, from situational awareness to secure connectivity, and stronger cooperation on counterterrorism. Finally, we are launching negotiations on a security of information agreement. Europe and India have chosen to be reliable partners to one another, and this is how we demonstrate the trust we share. Prime Minister Modi, distinguished friend, I want to turn to innovation, because here too we share core values. The freedom of research and science is paramount for us. Europe and India will always choose science. We will always choose progress, the way forward. We will always choose technology at the service of our people. It's part of who we are. And our cooperation on human-centric, trustworthy artificial intelligence is one of the best examples. So today I'm glad to announce that we are working on India's association with Horizon Europe. Backed by funding firepower of 100 billion euros, Horizon is the world's largest public research program, and I can't wait for our best talents to get to work to advance health, clean energy, frontier technologies, just to name some. We will set up EU-India innovation hubs. This will help researchers and startups to collaborate on next-generation technology. And we are also launching the EU-India Startup Partnership to boost co-creation and high-potential ventures. Finally, Prime Minister dear Narendra, we both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility.
We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people, and this openness benefits us all. As we conclude this 16th summit, let me reflect on another event of deep meaning. 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. Thank you very much. Thank you, Madam. With that, ladies and gentlemen, we conclude the press statements. Thank you very much for your presence. बड़ ट्रेड डील को कहा जाउछि मदर ऑफ ऑल डील। दुई देश मध्य फ्री ट्रेड डील घोषणा होइछि। दुई देश मध्य बढ़िबो वाणिज्य स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड डील नहीं औपचारिक घोषणा होइछि। भारत यूरोप मध्य चुक्ति नुआ शीर्ष को छुईब। इतिहास सबुठारु बड़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी एक कथा कहिसंती भारत और यूरोप मध्य बढ़िबो निवेश। दुई देशर अभिवृद्धि नहीं सृष्टि हेबो नुआ इतिहास। विशेष भाव में साइबर सिक्यूरिटी आतंकवादी विरोधी लड़ाई विशेषकर मजबूत हेबो। सुरक्षा और उद्भावन क्षेत्र को बड़ गति मिल। आपड़ सीधा सड़क चित्र देखुं जो भारत आउ यूरोप भितर गोटे बड़ ट्रेड फ्री डील घोषणा होइछि एवं चुक्तिनामा घोषणा होइछि। आपण प्रधानमंत्री मोदी को देखुं एवं एस जयशंकर मध्य अछंती। विशेष करके वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण चुक्ति हो सारी जो आगामी दिन में बड़ सुजोग भारतवर्ष रही। जदि आम देखा निवेश क्षेत्र में गोटे बड़ सुजोग सृष्टि हम। यूरोपर बहु बड़ बड़ निवेशक बा पुंजीपति माने भारत में पुंजी निवेश करने निवेश करने से मन बड़े फल भारतवर्ष को रोजगार मिल आर्थिक अभिवृद्धि मिल एवं इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्षेत्र में भारतवर्ष दुईगुणित दिगरे आगेब एवं जो आर्थिक इकोनॉमी को आमे समस्ते अपेक्षा करिसंती एवं अग्रसर दिगरे अग्रगति करुवा देश मानक सहित सामिल होगा भारतवर्ष जो विकसित भारत स्वप्न देखुची यही ट्रेड फ्री डील निहात भाव में एथिरे सहयोग करिबो एवं बड़ सुजोग सृष्टि करिबो। त्रिनाथ लेंका आम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ जोड़ी होती। सुक्त लेंका आपण देखुं भारतवर्ष यह गोटे बड़ दिन जोठी जे यूरोप भली देश आम पाखकू ट्रेड फ्री डील आगे आसी। ये खुशी निहात भाव में समस्त भारतवर्षर विकसित भारतर स्वप्न जितेबाला आम देखुंती विशेष करके उद्भावन साइबर सिक्यूरिटी एआई एवं पुंजी निवेश ये दिग को आपण केमती देखुंती एवं ए ट्रेड फ्री डील रे किभली भाव में साधारण लोक को लाभ मिल देश किभली भाव में आगेब टिके आपण विश्लेषण करंतु। सुक्त लेखा नमस्कार मुझे समस्त को कंग्रेचुलेसन जनइबी देशवासी को मध्य कारण आमे जो टेंशन स्ट्रेस भितर आमे रहुथिले जोटा कि पागलामी बाचलामी करुथिले जो आपणकर डोनाल्ड ट्रंप एत बड़ कंट्री गोटे प्रेसिडेंट से जो टारिफ्र जो धमकी बा आपणकर जदि कहिबे टारिफ्र जो अस्त्र से प्रयोग करुथिले गोटे टेररिज्म भली गोटे एक्ट करुथिले ता भितरे आपण जो देखिबे भारत वर्तमान गोटे साइलेंटली
बर्तमान साइलेंटली आस्ते आस्ते आगु को मूव करुच्ची कारण प्रथम सी जहाँ भी कहले हाँ ठीक अच्छे आमको मंजूर आम ताकू एक्सेप्ट करी चलीचु एवं केबे भी तांको सामना रे मुंड नुआइनु तेणु वर्तमान जो देखिए सेटा आस्ते आस्ते आमर जो एक्सपोर्ट जेतिकी आमको प्रॉब्लम होतला जेतिकी आमर कम होतला बर्तमान यूरोपियन कंट्री पाई गोटे बाट खोली गला कारण यूरोपियन कंट्री पाई जोटा ट्रेड डील जोटा आपण देखिए 18 वर्ष हेलानी अटकी रहितला जोटा कि आपण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेले आपण भावंतु भारतर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आपणकर आईटी कंपनीजकर आईटी एक्सपोर्ट्स एपटे आपणकर इलेक्ट्रोनिक्स आपण जदि कहिबे इलेक्ट्रोनिक्स मेडिसिन्स स्पेशलाइज केमिकल्स ये सबुगुड़ार आमे यूरोप कंट्री को आमे एक्सपोर्ट करि परिबा कारण आपण देखंतु चाइना एंटायर यूरोप मार्केट को कंट्रोल कर रखिछि जोटि चाइना रे मैन्युफैक्चरिंग होउछि एवं से सेठी की एक्सपोर्ट करूचंते जेतु बडा फ्री ट्रेड हेला परे बर्तमान भारत सहित चाइनार भारत सहित यूरोपियन कंट्री मानकर बिजनेसटा पूरा स्मूथ हे जिवो तेणु एथिरे एठी प्रधानमंत्री कथा आसुची जेतेबेले अमेरिकार आपण जानिचंती वेनेजुएला राष्ट्रपति को उठे आनिबा परे समग्र राज्य रे समग्र राष्ट्रगुड़िक जो भली भाव में भयभीत अवस्था अच्छी और युद्ध आशंका भी कराउछि एमिति कि युद्ध जहाज समस्ते महासागर भितर लॉन्च कर सारी किभली क्यों परिस्थिति भी किसी हुए किंतु प्रधानमंत्री मोदी सठिक वैदेशिक नीति गोटी चालन ये गोटे बड़ सफलता बोली आम कहीपर सुक्त लेंका एक्जाक्टली आपण जो देखिए प्रथम से कथा कहवाई चाहूली किसी भी हेले भारत को धमकाउथिले जे आमे 100% 50% टैरिफ 100% टैरिफ 200% टैरिफ 500% टैरिफ जदि आमे एटा करिवो सेटा करिवो वर्तमान देखंतु सी भारत सहित जो करथिले भारत साइलेंटली डील कला एवं कूटनैतिक स्तर रे आपण जो देखिए वैदेशिक नीति रे सी वर्तमान कौन है समस्त को एकजुट कर पारला जोटे कि आपण जो देखिए चाइना रशिया भारत सी गोटे आपणकर देखो ब्रिक्स कंट्री भितर से भी आपणकर गोटे बहुत बड़ सफलता से रखिंट एवं ता सहित एपटे यूरोपियन कंट्रीज कारण सेपटे से कनाडा सहित जो लगे एपटे ग्रीनलैंड को कहला यहाँ मुझे अरे कौ पागला बाचलामी कौन करुँच सी निजे ही जानी थे कारण अन्य ज्योति लोक मैंने कहते गोटे पागला अन्य क्या बुझेब कि ट्रम्प को बुझेवा नामुमकिन है नहीं ये सुक्त लेंका ये तो निहाती भाव में ट्रम्प को बाचलामी आज समग्र विश्व को गोटे बड़ निदर्शन दौची जोठी कह जाए जे हाथ ठारिकी युद्ध को आमंत्रण करवा जा ट्रम्प वर्तमान समय वैदेशिक नीति एवं गोटे पर गोटे बाचलामी बा ग्रीनलैंड को अख्तियार करने कथा कहतु वेनेजुएला उपर आक्रमण करने कथा किंतु कथा आसूची आपण जानते जितेबाला यूरोप कंट्री सहित वर्तमान समय ट्रेड फ्री डील कथा सामना को आसिलानी एवं कहुच्छे अमेरिका परोक्ष धमक दे पारे एवं साधारण लोकों मन में प्रश्न यूरोप एबे जो सरकारी प्रोसीडर अच्छी कैबिनेट अप्रूवाल मिलिबो परे यूरोपियन पार्लियामेंट रे अप्रूवाल मिलिबो ये किछि मासर व्यवधान भितरे ट्रम्प कर धमकी किंबा परोक्ष कौन प्रकार दबाव नीति जोगु यूरोप पछघुंचा दे पारे कि ये आकलन आपण लगे पारुछंती देखंतु एथिरे हबो नाही कारण यूरोप उपरे सी धमकी देचंती जदि ग्रीनलैंड को अख्तियार करिया भीतर जदि से माने मुह खोलुचंती बा ऑब्जेक्शन करिवे देन यूरोपियन यूनियन उपरे से एडिशनल टैरिफ लगेबो तेणु एपटे से खाली धमकी टैरिफ रो धमकी देखै कि से केछि करबे निज कंट्रीटा को ही बर्बाद करिवे तेणु वर्तमान टाइम रे मते लागुनी कारण यूरोपियन कंट्री भी वर्तमान भी तांका एगेंस्ट रहिछि कारण यूरोप जदि जदि ग्रीनलैंड को नेला तापर आ गोटे कह फ्रांस रो पेरिसटा को नहीं जीवी तापर कह मु से स्विट्जरलैंड रो से बरफटा मते भल लागुची मो वाइफ को भल लागुची देन मु ताको दे दियो अरे भाई तमे कोन एटा कोन तमरो कोन घर गोटे ये ना कोन तो जहाँ पाइबो ता नहीं जीवो तेणु बर्तमान आप जदि देखिए 1600 टाइम्स तांकर नेटवर्थ बढ़ी डोनाल्ड ट्रम्प बर्तमान प्रेसिडेंट भितर गोटे वर्ष भितर से तांकर निजर वेल्थ क्रिएट करछंती तेणु वर्तमान टाइम रे यूरोपियन कंट्री बैकआउट करिवार प्रश्न उठू नाही एवं ता सहित एबे यूरोपियन कंट्री सहित आपण जे देखिबे यूरोपियन यूनियन जो बर्तमान एबे आमे लाइव रे भी देखुतली प्रधानमंत्री मोदी जी प्लस सेक्रेटरी प्लस प्रेस एठी आपनकर यूरोपियन माने आपनकर हेड मानकर
तेणु से बहुत से इट इज ए हिस्टोरिक मोमेंट कारण एथिरे किसी तिलमात्र संदेह ना तेणु फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेले अल्टीमेटली तांको देशरू आम देश को भी आसो आम देशरू तांको देश को भी जीव कारण यूरोपियन कंट्री जो सब आसूची आपण लग्जरी कार जोटा 110% लगुला पाखे 40% को पलि आसो कि तापर आहरी भी पर सेटा कमिजिव एवं अदर जो आपण जो आमे जो एक्सपोर्ट करवा सेठिपाई भी उन्मुक्त हो चाइना जेहेतु मैन्युफैक्चरिंग करके यूरोपियन कंट्री को पठाऊँगी जो प्राइस रे आमे भारत गोटे आपणकर मैन्युफैक्चरिंग हब हो पार एवं कंट्री मान कंपनी मान को सपोर्ट मिल पार एवं से ये मैन्युफैक्चर करेंगे एवं ता सहित डायरेक्टली जाकि यूरोप में पहुँचब तेणु से आप जोटा आम कौच विकसित भारत जदि आप देखिपे मो बैच भी बर्तमान आप देखुं इमिडिएटली इट इज नॉट इट इज फॉर माय पर्सनल हिसाब से मुझे रखी कारण विकसित भारत 2047 आम निहाती विकसित हो पार जो डेवलप्ड कंट्री पहुंची पारिबा कथा आसुची जे भारत वर्ष सहित यूरोपियन कंट्री जेतेबेले ट्रेड फ्री बड़ डील घोषणा हो सारे ये आउ किछि समय भितर बा किछि मास अपेक्षा पुंजीनिवेशकारी आसवे सिमिलार बिजनेस सब कौन कौन यूरोप आमठू कौन लाभ पाइब आमे यूरोप ठू कौन लाभ पाइबा विशेष करके आमर आकलन होची उद्भावन कथा कहतु एआई क्षेत्र कथा कहतु एवं ता सहित सबुठू बड़ भरोसा होची यूरोपियन कंट्री उपरे जे पुंजीनिवेश तो भारत वर्षठू यूरोप एमती कौन पाइब जो कि से मन बड़े आमको हुए तो बड़ सुजोग सृष्टि हो पारे किंतु एक कथा साधारण लोके जाना चाहते भारत वर्षठू यूरोप को कौन लाभ मिल देखो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आपणकर यूरोपियन कंट्री को जीव आपणकर एठू स्पेशलाइज केमिकल्स यूरोपियन कंट्री को जीव मेडिसिन्स यूरोपियन कंट्री को जीव फार्मास्यूटिकल्स भीतर आपन देखिबा एवं ता सहित टेक्सटाइल्स आपणकर एठू मैन्युफैक्चर के सेठिके जीव एवं आपण जदि देखिबे स्पेशलाइज केमिकल सहित नॉर्मल आपण जनरल केमिकल्स आपणकर रेयर अर्थ कथा आपण जदि कहिबे आमे भी डिफरेंट कंट्री आपण एठिकी भी आनी परिबा एवं आ सहित आमर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे स्टील भी आपणकर एठी आपणकर आमे इंडिया रो एक्सपोर्ट करूचे तेणु यही सब क्षेत्र जो देखा आम भारतीय कंपनी माने सबुठ बेनिफिट पाई परिबे एवं एटा होचे मेजर कथा कहबा किंतु माइनर रे बहुत छोट छोट कंपनी अछंती जो छोट छोट सेक्टर अछि एवं वर्तमान तो फ्री ट्रेड हे जिवो डिफरेंट सब प्रकार कंपनी आपन जदि देखिबे सब प्रकार सेक्टर सेमानकर जहाँ रिक्वायरमेंट रही आमे ताको भरपाई करि परिबा एवं आमे तांको पाखरु आमे प्रायतः आमे यूरोपियन कार्स आपन जदि किनिबे आमे किनुचे से सबुड आमे पाई परबा एठो मोटरसाइकिल जाउची सेठी भी सेल होउची तेणु से सेक्टर मोटर बाइक भी सेठी भी आपणकर होउची एक्सपोर्ट करूचे आमे तेणु ए सब क्षेत्र रे जे देखिबा विभिन्न क्षेत्र रे भारत लाभ पाइबो एवं विभिन्न क्षेत्र रे यूरोप लाभ पाइबो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिनाथ लेंका आम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ जोड़ी होते आम सहित सविशेष तथ्य विषय आलोचना करते बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त लेंका दर्शक बंधु कथा होउची जेतेबेले बड़ फ्री ट्रेड डील कथा सामना को आसीची सेतेबेले प्रसंग जे अनेक समय रे आमे देखुतिले जे बारंबार तारीफ बढ़िबा नै जेतेबेले डोनाल्ड ट्रम्प धमक दउथिले से समय रे प्रधानमंत्री मोदी एवं एस जयशंकर का कथा कहतु एभली एक विदेश नीति को लेकिन बड़ गोटी चालना है जो गोटी चालना रे आज यूरोप भली गोटे देश सहित फ्री ट्रेड डील वर्तमान समय संभव पारे तेबे प्रधानमंत्री मोदी कौन प्रतिक्रिया रही है सुनवा यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं।
हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. That's why today's free trade agreement is of historic importance, one of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several agreements and MOUs. These documents reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation as part of the India-EU strategic cooperation, strategic partnership. We will begin with the signing and exchange of political declaration on conclusion of negotiations of the India-EU Free Trade Agreement. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. ब्रेक पर स्वागत। पुरी रे टूर एंड ट्रैवल संस्था उपरे चढ़ाऊ, बेआईन टूर एंड ट्रैवल परिचालना करुवा संस्था उपरे पुलिस पक्षरु रेड। पुरी पुलिस पक्षरु विभिन्न थाना अंचल रे थिबा एजेंसी उपरे जारी रही चढ़ाऊ। पुरी रु आसुथिबा पर्यटकों को विभिन्न क्षेत्र में हैरान और ठकई करुवा अभियोग रे एही एक्शन होछि। पंजीकरण, जीएसटी नंबर, इलीगल ट्रांजैक्शन आधार रे एही चढ़ाऊ जारी रही। आसंता काली सकाळ 6टारू दिन 2टा पर्यंत नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद डाकरा। नवनिर्माण कृषक संगठन सह नवनिर्माण युव छात्र संगठन मध्य ए बंद डाकरा सामिल होइछि। चाषी धान एमएसपी और इनपुट सब्सिडी मिसाई क्विंटाल प्रति 3100 टंकार किणा जाऊ। टोकन और मंडी व्यवस्था रे समस्त दुर्नीति दूर करा जाऊ भली विभिन्न दाबी रही। ए बंद डाकरा जरूरीकालीन सेवा को छाड़ी अन्य सबुकिछि बंद रहिबा नै कहिछि नवनिर्माण कृषक संगठन। सेपटे संगठन ओडिशा बंद को नकली चाषी आंदोलन बोली कहिछि बीजेपी। नवनिर्माण कृषक संगठन नेता चाष जानी नाहांती। बीजेडी सरकार रे चाषी हताश होते आ मध्यस्थी दलाल माने मालेमाल होते। बीजेपी सरकार रे चाषी उत्साहित अधिक 800 टंका पाउछंती। एही बंदर किछि प्रभाव पड़िबो नै बोली कहिछि बीजेपी। लोक माने धान आनिकरी आसीबे रास्ता उपरको, जे धान रास्ता उपरको आसीबे, नेशनल उपरको आसीबे एवं कहिबे ए बंद केवल किछि लोक करूनाहांती। आमे निजे जे चाषी, आमे निजे जे पीड़ित, हमर 86 क्विंटलटा 8 क्विंटल रे पहुंची ये बिक्री हबो कि नाही, ए कथा कृषि मंत्री जवाब दियतु। धान किणारे हेतिबा व्यापक अव्यवस्था को नहीं, विशेषकर मंडी रे जो प्रकार चरम अव्यवस्था हेछि एवं 150 क्विंटाल रो अधिक जदि विक्रय हुए ताहले इनपुट सब्सिडी को जो राज्य सरकार बंद कर देइचंती। एई सब प्रसंग रे
विशाल चाषी समावेश कांग्रेस तरफ करा कौन चाषी ए आंदोलन ना कि नकली चाषी जो मानकर प्रोफेशन हूँ निजर संस्था बंचेक रखा जो मैंने मिलर को साहाय्य करती जो मैंने दलाली करती मिलर मान पाखे से मैंने आज एभली आंदोलन कर जी समर्थन दौरान जो कांग्रेस दल कथा कहले कांग्रेस दलर बर्तमान ना फेस भैल्यू ना कि कांग्रेस दल कौन आंदोलन डाकरा देवा अवस्था ना कांग्रेस दल जेहेतु चाषी विरोधी से कांग्रेस बर्तमान आंक पछरे नाउ हो खबर को जारी रहिबो किंतु समय हिचे एक छोट कमर्शियल ब्रेक I think we can. ब्रेक पर स्वागत अपराह 4:30 हेबो श्रीमंदिर छत्तीसा निजोग बैठक महामहिम राष्ट्रपति गस्त समय दर्शन निमंते प्रस्तुति को नहीं बैठक रे हेबो आलोचना आसंता फेब्रुआरी 3 तारिख रे ओडिशा गस्तरे आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी आसी श्रीजू को दर्शन करिवे महामहिम राष्ट्रपति गस्त पाई आज पुरी रे बसुची नीति सब कमिटी और छत्तीसा निजोग बैठक राष्ट्रपति गस्त समय नीतिकांति किपरि सुखलित केउ सेवायत उपस्थित रहिबे किभली दर्शन करिवे केउ माने श्रीमंदिर निकट में राष्ट्रपति को स्वागत करिवे से नहीं आलोचना करा जिवो प्रथमे श्वेतगंगा पुष्करिणी रे निज पितृपुरुषों को पिंडदान करिवे महामहिम श्वेतगंगा ठारे पिंडदान समय किए किए रहिबे सेठारे किभली व्यवस्था करा जिवो से नहीं मध्य आलोचना करा जिवो बैठक रे जिलापाल एसपी समेत छत्तीसा निजोगर सदस्य माने उपस्थित रहिबे पुरी जोड़ी आम सहित प्रियदर्शन राष्ट्रपति गस्त को लेकिन किभली भाव में वर्तमान समय प्रस्तुति प्रशासन पक्षर चली एवं तो जहाँ सूचना आसूची छत्तीसा निजोग बैठक हम एवं प्रकृति में जो मैंने कौलिक पंडा अच्छा से केते अग्राधिकार दिज्व किए किए सब रे कौन रही आपे सविशेष तथ्य देखो श्रीमंदिर छत्तीसा निजोग समस्त नीतिकांति को प्रथम मोहर मारी था आज जो बैठकटी हे श्रीमंदिर छत्तीसा निजोग और नीति सब कमिटर जुग्म बैठकटी हे उभय कमिटी निष्पत्ति नेबे जे किभली भाव में श्रृंखलित दर्शन समय श्रृंखलित नीति कहीं दिन तमाम जो नीति रही श्रृंखलित कले ही मझे राष्ट्रपति आसिकी सुरुखुरे श्रृंखला भाव में दर्शन करें जेहेतु सुरक्षा भी गोटे पार्ट तेणु निहाती पक्षरे नीति को त्वरान्वित करने को पड़ो दर्शन को त्वरान्वित करने को पड़ो जो समय महामहिम दर्शन करेंगे से समय नीतिकांति को ठीक समय सुचारू रूपे संपादित करदे तो आसंता फेब्रुआरी 3 रे जो बैठक रही निहाती पक्ष जो गस्त रही निहाती पक्ष गुरुत्व रही जेहेतु विभिन्न कार्यक्रम रही समस्त जगार प्रशासनिक प्रस्तुति जोर धरी जेहेतु पिंडदान कार्यक्रम रही दर्शन कार्यक्रम रही महाप्रसाद सेवन कार्यक्रम रही ये सब किभली भाव में श्रृंखलित हो जहाँ तो कौलिक पंडा तो निश्चित पक्ष रे अन्य जो सेवक मैंने संपृक्त रे जेहेतु नीतिकांति सहित जो संपृक्त सेवक मैंने हूँ महाप्रसाद प्रस्तुति सहित जो सेवक मैंने हूँ से किभली भाव में निज निज कार्य को निज निज नीति को त्वरान्वित करें श्रृंखलित भाव में करें से नहीं कि आज बैठकटी हे अपराह 4:30 जो बैठकटी हे प्राय 1 घंटा रू 1.5 घंटा तो ये बैठक चलो विभिन्न विषय नहीं कि आलोचना हो छत्तीसा निजोग सहित नीति सब कमिटर समस्त कर्मकर्ता मैंने उपस्थित रहिबे सहित एसपी जिलापाल जो मैंने सुरक्षा दृष्टिकोण जड़ित रही निहाती पक्ष उपस्थित रहिबे केउठू सेवायत मैंने उपस्थित रहिबे एवं दर्शन केतेबेले हेबो केमिति हेबो ताको नहीं कि निहाती पक्ष आलोचना हेबो जो मैंने श्रीमंदिर पाखे राष्ट्रपति को स्वागत करेंगे से नहीं कि आलोचना हेबो एवं जो रूट रही श्वेतगंगा टू मंदिर मंदिर टू श्वेतगंगा जो जीवे
सेठी किए उपस्थित रही किभली भाव सुचारू रूपे संपादित कर सविशेष आलोचना हेबो और पिंडदान समय क्यों सेवक मैंने उपस्थित रहा दरकार सुरक्षा दृष्टिकोण क्यों माने उपस्थित रहा दरकार से नहीं गोटे सविशेष आलोचना हम मोटामोटी भाव में कहवा राष्ट्रपति गस्त समय किभली भाव में दर्शन श्रृंखला लोक मान असुविधा हेब ना नीति में कौन बाधक हेब ना सहित सुरक्षा दृष्टिकोण राष्ट्रपति निजे जाकि भाव में श्रृंखलित दर्शन करेंगे से नहीं विस्तृत भाव में आलोचना हो निहाती पक्षे अपराह 4:30 को अपेक्षा रही जेहेतु श्रीमंदिर कार्यालय राष्ट्रपति गस्त को अपेक्षा समस्त प्रस्तुति वर्तमान समय शेष करने प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान समय लगी पड़ी जो छत्तीसगढ़ नियोग बैठक पर प्रशासन विभिन्न व्यवस्था भाग नहीं जो राष्ट्रपति गस्त में कौन त्रुटि न रही दर्शन सहित अन्य नीतिकांति किभली भाव में सुरुखुर में पूरण हम से दिगरे समस्ते चेष्टित अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दर्शन आम सहित पूरी प्रतिनिधि जोड़े अलोड़ा भूभाग में त्रिरंगार धूम प्रधानमंत्री प्रेरणा एथर परित्यक्त द्वीपर उड़ीथिला त्रिरंगा साधारणतंत्र दिवस अवसर में ओडिशार 13 द्वीपर त्रिरंगा उड़ाई ओडिशा पुलिस सीमा सुरक्षा बल तटरक्षी बाहिनी सह मिसी ओडिशा पुलिस एसबू परित्यक्त द्वीपर उड़ाई त्रिरंगा ओडिशा भूभाग सह प्रत्यक्ष संपर्क नथिले भी एसबू द्वीप सह आमर भागवत और ऐतिहासिक संपर्क रही भद्रक नया टापू कोकोनेट व्हीलर लंग व्हीलर स्मॉल व्हीलर बुढ़ियापाली उड़ावाली कनिका द्वीप सह केन्द्रापड़ार कादुओ पोल धनी छड़ा और हुकीटोला पुरी जिलार नलबण कालीजाई और पारिकुदरे उड़ीथिला तिरंगा ओडिशा पुलिस हाथीर मृत शरीर उद्धार बलांगीर जिला मुरीबाहाल रेंज अंतर्गत जामिलिसर गाँव में घटी घटना हाथी मृत्युर कारण अस्पष्ट रही मुरीबाहाल रेंजर वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल में पहुंची तदंत करिसेंति हाथीर मृतदेह उद्धार बलांगीर मुरीबाहाल रेंज जामिलिसर गाँव में घटी घटना हाथीर मृत्यु कारण अस्पष्ट घटनास्थल में वन विभाग तदंत आरंभ समय सरी बुलेटिन को एट रखुचु अधिक खबर पाई देखु थांतु अर्गस न्यूज नमस्कार। The next document to be signed is the India-EU Security and Defence Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaya Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We now have the signing of the Comprehensive Framework on Cooperation on Mobility. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. A few documents will now be exchanged.